Dear students, in the last lecture we have been facing a little bit problem of लोडिंग एक्लिप्स सॉफ्टवेयर। तो हमारा जावा का जो एक प्रोग्राम मैंने आपसे कहा था कि हमने जो प्रोग्राम सी प्लस प्लस में किया उसी को एज इट इज़ जावा में कन्वर्ट करते हैं। तो जो लोग जावा को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए जो है वो मैंने जावा में कोडिंग की है। तो दिस इज़ द सेम प्रोग्राम। द प्रोग्राम सिंपली perform according to the choice. If the choice is plus, addition would be calculated, and if the choice is minus, subtraction would be calculated. If the choice is static, then multiplication and forward slash division would be there. So whatever the operation would be performed, it would depend upon the choice you have entered. So first of all, by the same way, we simply take input a string, then we would convert this string into an integer. Over here we have first converted the string into a mean integer value. Then again a second value is input, and the second value is also a string because it takes value as a string. Then that string is converted using % into the second integer b. So we would have a and b, the integer values, and the third we have entered and we want to enter an operator, and for that purpose we have entered a string by the same way. But right now we have a difference. The difference is that first we enter string and we convert that string into integer, but now we enter a string and we have to convert it into a character. So to convert a string into an integer we use %, but when we need to convert a string into a character we have to go for s dot character at. So ये जो हमारा function है s dot character at, that would be used to convert string value into a character value. This one, look at this character at, it would convert the string into a character value. The choice is your character variable. So char add, or we have placed 0 over here. 0 mean the first subscript, the subscript of a string, चूंकि वो character array की सूरत में ले रहा है तो the first subscript would be 0. So the value on the first subscript that would be converted into the character. So the s string, the value of the s string would be converted into a character value choice. So by using character at, this method would convert the string value into a character value. So the string s would be converted into character value, and that character value would be in choice variable because we have declared this choice variable as character variable. So in choice now we have a character, and that character value is either plus, minus, multiplication or division. तो यहाँ पे हम जो है वो स्ट्रिंग को करैक्टर में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए करैक्टर ऐड का फंक्शन यूज़ किया हमने, और इससे क्या हुआ कि हमारा जो स्ट्रिंग था उसकी 0th लोकेशन में पड़ा हुआ जो करैक्टर था वो करैक्टर चॉइस को असाइन हो गया। अब चॉइस के पास हमारे पास एक सिंगल करैक्टर आ चुका है। तो इन द सेम वे we use the instructions. If choice equal to plus, then it would calculate c is equal to a plus b, and if the choice equal to minus, it would calculate a minus b. If choice equal to static, it would calculate a multiply by b, and if the choice equal to slash, it would calculate c is equal to a minus b. If the first condition gets true, the addition would be calculated. If the second condition gets true, subtraction would be calculated. If the third condition gets true, multiplication would be calculated. If fourth condition gets true, then division would be calculated. But if all these four conditions gets false, then control goes to else and the wrong option would be there. So जो लोग जावा में काम कर रहे हैं उनके लिए और C++ में भी सेम आपका फॉर्मेट है
कि जब आपने करैक्टर का कंपैरिजन करना होता है तो उसके लिए आपको करैक्टर वैल्यू को सिंगल कोट में रखना ज़रूरी है। आपके न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यहाँ पे सिंगल कोट का आना ज़रूरी नहीं है। सो करैक्टर कंपैरिजन जब भी आप करें, चाहे इफ में करें चाहे स्विच में करें, तो वहाँ पे करैक्टर कंपैरिजन के लिए उसे सिंगल कोट में करैक्टर को प्लेस करना ज़रूरी है। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, इंटीजर या फ्लोट के लिए उसे सिंगल कोट में नहीं रखना आपने, सिर्फ करैक्टर वैल्यूज़ को आपने सिंगल कोट्स में रखना है। देखिए जी, रन करते हैं इसे। एंटर फर्स्ट वैल्यू, आप कोई सी भी वैल्यू दें। देन एंटर सेकंड वैल्यू, then enter the choice is there, mean you have to enter plus minus multiplication or division। तो पहले हम प्लस एंटर करते हैं, तो कैलकुलेटेड वैल्यू वुड बी 65। अगर इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करें, फर्स्ट वैल्यू 24, सेकंड वैल्यू 10, चॉइस में हम माइनस एंटर कर दें, तो माइनस की जगह पे अगर अंडरस्कोर आपने गलती से एंटर कर दिया तो वो रॉन्ग ऑप्शन देगा, क्योंकि अंडरस्कोर उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने जो ऑपरेटर्स एंटर करने हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई भी ऑपरेटर, जैसे आप इसको एंटर कर देंगे तो उससे आपका रिजल्ट जो है वो रॉन्ग ऑप्शन में चला जाएगा, लास्ट वाले एल्स में चला जाएगा। तो इसलिए ऑपरेटर एंटर करते हुए ख्याल रखें कि आपने कौन सा ऑपरेटर एंटर किया। फर्स्ट करें, हम दोबारा इसमें वैल्यू एंटर करते हैं 24, सेकंड 12, अब आप एंटर करें माइनस, तो देखिए माइनस एंटर किया तो उसने सही रिजल्ट दिया। अब अगर आपका ऑपरेटर गलती से भी जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा कोई और एंटर हो जाएगा तो वो रॉन्ग ऑप्शन देगा और जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो ज़ीरो होगी। लेकिन अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में से कोई सा ऑपरेटर इनपुट करेंगे तो फिर वो उसके मुताबिक काम करेगा। फिर इसे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर 10, फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू लेट्स से 5। अब हम चॉइस एंटर करते हैं, फर्स्ट करें स्टैटिक, तो the value calculated would be 50. So for plus it would calculate addition, for minus subtraction, for static it would calculate multiplication, and for slash it would calculate division. But if none of the condition gets true, then the last else would be executed and wrong option would be displayed and the value of C would be 0, because none of the condition gets true and none of the operation has been performed. So the initial value of C would be displayed because none of the value is calculated if all these four condition gets true. But if any of the value or any of the condition gets true, you have entered plus, minus, multiplication or division, any of the operator matches and the condition gets true, you would get the relevant result. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आप वही सिंटैक्स है, सेम तरीकाकार है जो आपने C++ में रखा। तो आप जो भी लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं इस पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स दोनों लैंग्वेज में सेम है, लिटिल बिट डिफरेंस है। जो भी डिफरेंस जहाँ पे भी आया करेगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन, कीप इट अप एंड थैंक्स अगेन।